Hello friends, I am Himrata Rathore. Today I am going to share a lecture of class 10 geography. So let's start from chapter number 1, resource and development. Now, resources. What are resources? Everything available in our environment which is used to satisfy our needs is known as resources. जनरली हमारे इन्वामेंट में वे सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं, हमारी नीड्स को पूरा करती हैं, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं. बट इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन. फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू एग्जाम्पल. सपोज़ कोई एक विलेज है या टाउन है, वहाँ पर एक टेम्पल है. उस टेम्पल के नीचे कोई रिसोर्स पाया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल पाया गया है. तो क्या उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें? उसे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल कहते हैं. माना हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी है. फिर आता है सेकेंड, इकोनॉमिकली फिजिबल. हमें उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन क्या हमारे पास में इतना पैसा है, इतना मनी है कि हम उसे एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सके? सपोज़ हमारे पास में इतना पैसा भी है, बट क्या हमें ये पता है कि वो कितनी क्वांटिटी में वो पाया जा रहा है अर्थ के अंदर, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा? तो उसे इकोनॉमिकली फिजिबल कहा जाता है. अब हमारे पास में टेक्नोलॉजी भी है और हमारे पास में पैसा भी है. अब आता है नेक्स्ट, कल्चरली एक्सेप्टेबल. कल्चरली एक्सेप्टेबल में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो एक टेम्पल के नीचे पाया गया क्रूड ऑयल है. तो क्या वहाँ की सोसाइटीज़ के लोग, वहाँ के विलेजर्स हमें उस टेम्पल को तोड़ने की परमिशन देंगे उसे यूज़ करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए? तो ऑल दिस कंडीशंस आर वेरी हेल्पफुल टू यूज़ एनी रिसोर्सेज. नाउ अब जैसे मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताया कि कैसे हम क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. अब जब वो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो उसे रिफाइनरीज में भेजा जाता है to convert in different forms like petrol, diesel, wax, kerosene, etc. Now you all have seen how resources, how human being interact in physical environment through technology and set up institutions for their economic development. So this process is known as interdependent relationship between nature, technology and institution. So this is our introduction lecture. Now we will move on classifications of resources. On the classifications of resources, resources are divided into two parts: natural resources and human resources. Natural resources are those resources which created by nature, and under these conditions it is divided into two parts: renewable and non-renewable resources. So first we will start from renewable resources. Renewable are those resources which can be renewed by different properties. It has also two parts: continuous and biological. Clear? Wind, water and rainfall are the examples of continuous resources. And biological process, so biological also divided into two categories: natural vegetations and wildlife. Plant life and animal life, they are also a part of renewable resources. Now second is non-renewable resources. So non-renewable resources, it can be depleted. Under this process it also divided into two categories: recyclable and non-recyclable. First, recyclable. So some resources can be used again and again, for examples metals. And non-recyclables, it can be depleted, for examples fossil fuels. Now this is the examples of natural resources. Now second most important resources is human resources. The human resources are made by human. For example, structures and institutions. Structures and institutions are developed by humans on the basis of their quantity and qualities. So these are the important classifications of resources. Thank you.